Welcome dear students. In today's class we discuss about the abnormal molar mass and want of factor. This is one of the most important topic in JEE NEET. Now what do you mean by abnormal molar mass? Molecular mass can be calculated by any of the colligative properties. As you know that is relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point or osmotic pressure. By any of these properties, if we measure or measure the molecular mass of any compound, the relationship between the molecular properties and the molecular mass of solute is based on the following assumption. First, the solution is dilute, then the Raoult's law is obeyed. The Raoult's law is completely obeyed for the dilute solution, and it shows the deviation when the concentration of solute is high. And second, solute should not undergo the dissociation or association in a solution. There should not be any association or dissociation. But if any of the solute undergo the association or dissociation, then abnormality is observed in the molecular mass or colligative properties. This anomaly is primarily due to association of solute molecule और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल. किसी भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल के एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने की वजह से उसके मोलार मास हमने जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से निकाले होंगे उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज ऑब्टेन होगी. So it is necessary to identify what kind of association or dissociation undergoes by the solute molecule. Now, first we discuss about the dissociation. Dissociation means breakdown. Whenever salt-like or electrolytes like NaCl break down into Na plus and Cl minus, number of ions decreases. In case of dissociation, number of ions increases. If number of solute particle increases, then its molar mass decreases. Here the number of electrolyte dissociated in solution to give two or more than two ions. Therefore, the number of solute particle in solution is more than expected value. According to that, solution exhibit higher value of colligative properties, because as we know that colligative properties is number properties is depend on number of particles, and in case of dissociation number of particle increases, so this such molecules show the higher value of colligative properties. Since colligative properties is inversely proportional to molar mass, therefore molar mass of such substances calculated based on colligative properties is less than their normal value. यानी हमने जितना उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा कैलकुलेशन के बेस पे उससे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाले गए मोलर मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी. That means any of the electrolytes or solute molecule which undergo the dissociation in a given solvent, the molar mass of such solute is less than the expected value. Molar mass is less than the expected value. Now, we know that ionic compound when dissolved in waters they dissociated into cations and now, for example, if we dissolve 1 mole of potassium chloride in water, then as expected it gets dissociated into K plus and Cl minus ions. If this happens, there will be 2 moles of particles in the solution. There will be 2 moles, 1 K plus and 1 Cl minus. If we ignore the interionic interactions, 1 mole of ACl in 1 kg of water, we are expected to increase the boiling point of solution by 2 into 0.52, that is by 1.04 Kelvin. Now, if we did not know about the degree of dissociation, it could lead to the conclude that mass of 2 moles of particle is 74.5 gram. KCl का ब्रेकडाउन कितने में हुआ, K plus Cl minus यानी 2 पार्टिकल्स में हुआ. 2 पार्टिकल्स का वेट कितना हुआ, 74.5 ग्राम. मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ KCl कितना हो जाएगा, 2 मोल का वेट 74.5 and 1 is how much, that's 74.5 divided by 2, that is 37.25 gram. This bring into the light that when there is a dissociation of solute into ions, experimentally determined molar mass always lower than the expected value. जो भी ट्रू वैल्यू है उससे एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन मोलर मास कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा.
whenever there is a dissociation, experimentally determined molar mass is always less than, in case of dissociation, less than the expected value. If number of particle increases, molar mass decreases. In case of association, certain solute in solution are found to get associate. Now, this lead to the decrease in number of particles in solution. Thus, it result in decrease in value of colligative property. If value of colligative property decreases, molar mass increases. As already discussed, colligative properties is inversely related to molecular mass. Hence, colligative property, therefore higher value are obtained for the molar mass than normal value of undissociated molecules or unassociated molecules. तो इस केस में क्या होगा, मोलर मास कैसा आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कम हो. For example, ethanoic acid dimerizes in benzene solution due to hydrogen bonding. 2 moles of ethanoic acid associate to form dimer molecules. Dimer molecules होंगे तो they get associate and appear as a single molecule. This is due to the fact that benzene has a very low value of dielectric constant. In this case, number of particles is reduced due to the dimerization. Association of molecule is depicted as follow. Now, it can be doubtfully said that if all the molecules of ethanoic acid associate in benzene, then delta Tb or delta Tf for the ethanoic acid will be half than the normal value. And this is the association form. Associated form of ethanoic acid. Associated form of ethanoic acid. Next important factor is want of factor I. Want of is the scientist who give this factor, and by using this factor, whatever the anomaly is as arrived in the determination of molecular mass of the solute can be overcome. So it's played a very important role whenever we like to determine the molar mass of any compounds by using colligative properties. Then we need to understand what is the want of factor I. In 1886, the want of introduced this factor and to express the extent of association or dissociation of solute in solution. It is the ratio of normal and observed molecular masses of the solute. That is, I is equal to normal molar mass divided by observed molar mass. Dear student, please keep in mind the following 3 important outcomes of the value related to value I. In case of association, जब भी association होगा, then I value is found to be less than 1. I is less than 1. In case of dissociation, I is found to be greater than 1. I is found to be greater than 1. For all the dissociation, value of I is greater than 1. For all the association, value of I less than 1. And for non-electrolyte like glucose, sucrose, urea, etc., I is equal to 1. Value of I is equal to 1. Now, since colligative property is inversely proportional to molecular mass, the want-of factor may be also be written as follow. Now, for colligative property, I is equal to observed value of colligative property, जो कुछ भी आपने observe किया वो after experiment, divided by calculated value of colligative properties, assuming that there is no association or dissociation. I is equal to observed value of colligative properties divided by calculated value. Or I is also equal to number of particles after association or dissociation. Number of particles after association or dissociation divided number of particles before association or dissociation. Number of particles before association or dissociation. Now, introduction of want-of factor modify the equation of the colligative properties as follow. All the 4 colligative properties which we study in this chapter can be modified as follow. First, relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure normally termed as P01 minus P1 by P01 is equal to X2. Instead of that,
we can write it P naught A minus PA by P naught A is equal to I into XB. Want of factor I is introduced before the concentration term XB. Likewise, elevation in boiling point delta TB is equal to KB into M now become delta TB is equal to I into KB into M. I into KB into M. Likewise, depression in freezing points become delta TF is equal to I into KF into M. Similar way, osmotic pressure become pi is equal to I into CRT. Pi is equal to I into CRT. These are the modification take place in the equation of colligative properties. In all the four colligative properties, if the value of I increases, then boiling point and osmotic pressure increases. If value of I increases, then boiling point or osmotic pressure increases, whereas freezing point and vapor pressure decreases. Freezing point and vapor pressure decrease with increase in value of I. Now, from the value of I, it is also possible to calculate the degree of dissociation or degree of association. For entrance examination point of view, this is very important. Now, degree of dissociation, that is the fraction of total molecules which dissociated into simple molecules or ions. जो कुछ भी total molecules में कितना fraction और कितने percentage of molecules dissociate होंगे वो निकालना है. That is, we can calculate degree of dissociation alpha is equal to I minus 1 divided by M minus 1 by using this equation. Alpha is equal to I minus 1 divided by M minus 1, where M is equal to number of particles in solution after dissociation. Number of particles after dissociation in the solution. For degree of association, it is defined as fraction of total number of molecules which associate or combine together resulting to formation of bigger molecules. Here alpha is equal to 1 minus I divided by 1 I minus 1 divided by 1 divided by M minus 1. Or we can also say that alpha is equal to 1 minus I into M divided by M minus 1. 1 minus I into M divided by M minus 1. Here M is equal to number of particles in the solution. This table is very important for all those students who are appearing for JEE and NEET examination and like to answer the question in a short form. Now, first go through the dissociation reaction. Go through the first example, NaCl. NaCl undergo the dissociation to form a Na plus plus Cl minus. So here value of M, number of particles after dissociation, M is equal to कितना आ जाएगा, कितने में dissociate हुआ, Na plus and Cl minus दो में dissociate हुआ. Clear? And what will be the expected value I? कभी भी किसी का भी expected value I निकालना है. So number of particle after dissociation, M value divided by, that is product by reactant, number of particles of product divided by number of particles of reactant. प्रोडक्ट के पार्टिकल कितने हैं आपके, दो, और रिएक्टेंट के कितने हैं, 1. 2 by 1 is equal to 2. इफ 100% डिसोसिएशन होगा तो 2. इसका मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ सॉल्यूट होंगे वो यानी 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 2. सो रेंज ऑफ आई फॉर NaCl is between 1 to 2. 100% डिसोसिएशन हुआ तो 2. Likewise CaCl2, Ca2 plus plus 2Cl minus. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, Ca2 plus plus 2Cl minus करेंगे 3 पार्टिकल्स, एक कैल्शियम का और 2 क्लोरीन के. ओके, नाउ सो I वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 3 डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन यानी 1. 3 by 1 इज इक्वल टू 3. तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा 1 और मैक्सिमम वैल्यू आएगा 3. 1 to 3 का रेंज बनेगा. Likewise AlCl3. AlCl3 get break down into Al3 plus plus 3Cl minus. So here number of particles become 4. Okay. Now range क्या बनेगा, 4 by 1. I value का expected value कितना आएगा, 4 by 1. And range क्या होगा, 1 to 4. Likewise MgSO4 get break down into Mg2 plus plus SO4 2 minus. In this case number of M वैल्यू कितने आएंगे 2 और Y वैल्यू कितना होगा 2 by 1, 2 ही होगा. रेंज कितना होगा 1 to 2. मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू रेंज में बनेगा. K3FeCN6. K3FeCN6 लेंगे तो इस गेट ब्रेक डाउन इनटू 3K plus plus FeCN6 3 minus.
So here number of particles become 4. Okay, very good. So number of particle after dissociation 4 और before कितने थे 1, तो 4 by 1 4, तो minimum value कितना होगा 1 और maximum 4. Instead of that, if K4 FeCN6 is there, it can break down into 4K plus FeCN6 4 minus. So number of particle कितना है 4 plus 1 5 और इसका रेंज क्या बनेगा 5 by 1. तो आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 5 और क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू 1 to 5. Acetic acid in water or any carboxylic acid derivatives in water get breakdown into Ca3COO minus plus H plus. Here I value is again number of particles become 2. 2 by 1 is equal to 2. 1 to 2. Here my dear students, remember that acetic acid is a weak acid, does not undergo the dissociation more than 5%. So value of I for the acetic acid is always less than strong electrolyte like NaCl or KCl. Even though M value will be same, expected value will be same, but strong electrolyte gives far better dissociation as compared to weak electrolytes. So value of I for weak electrolyte is always less than strong electrolytes. For association, let us go through the study the following example. For example, first we take the O2 molecules. O2 molecules, how it is obtained? 2 mole of oxygen combined to give O2. It is undergo the dimerization. 2 molecules combined. Then is called as dimerization. Here M value is number of particles before association. तो बिफोर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं O2 के 2 ऑक्सीजन आइटम थे तो 2 एंड नाउ आई वैल्यू प्रोडक्ट के पार्टिकल्स कितने हैं 1 और रिएक्टेंट के कितने हैं O2 1 और रिएक्टेंट कितने हैं 2 ऑक्सीजन तो 1 by 2 तो 0.5. तो इसका आई वैल्यू का रेंज आएगा 0.5 से लेके 1 तक 0.5 से लेके 1 तक. नेक्स्ट ओजोन मॉलिक्यूल O3 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन का आइटम कंबाइंड टू गिव O3. हियर नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन कितने थे 3. सो आई वैल्यू कितना होगा 1 by 3 यानी कितना आ जाएगा 0.33. तो रेंज कितना बनेगा 0.33 से 1. लाइकवाइज P4 मॉलिक्यूल सेकेंड O3 ट्राइमर कहते हैं उसको P4 टेट्रामर 4 फॉस्फोरस आइटम कंबाइंड टू गिव P4. नाउ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं बिफोर 4 है तो M इज इक्वल टू 4 होगा और यहाँ पे रेंज प्रोडक्ट के पार्टिकल कितने हैं 1 और रिएक्टेंट के 4 तो 1 by 4 0.25. तो आई वैल्यू का रेंज कितना आएगा बिटवीन 0.25 to 1. ओके लास्ट वन S8 के अंदर 8 मोल ऑफ सल्फर कंबाइंड टू गिव S8 मॉलिक्यूल्स. सो यहाँ पे कितने होंगे M वैल्यू 8 और I वैल्यू कितना आएगा 1 by 8 0.125. तो रेंज कितना बनेगा 0.125 to 1. Dimer of the acetic acid in the form of dimer 2 mole of acetic acid in benzene gives dimer form. Here M वैल्यू कितना होगा बिफोर 2 और I वैल्यू 1 by 2 कितना आएगा 0.5. सो रेंज बनेगा 0.5 to 1. Dear students, always remember carboxylic acid in water undergo the dissociation I greater than 1 and carboxylic acid in benzene or any organic solvent undergo the association I less than 1 होगा. तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड the sum of the numerical or impact of I value on the numerical value. Now example 1, molar freezing point constant for the water is 1.86 degrees Celsius. Therefore the freezing point of 0.1 molar NaL solution in water expected to be कितना हो सकता था. डेल्टा TF कितना दिया हुआ है 1. KF दिया है 1.86. मोलालिटी कितना दिया है 0.1 मोलर. तो क्या होगा which will be the expected value of freezing point. 4 ऑप्शन इस तरीके से हैं. नाउ कैलकुलेट डेल्टा TF इज इक्वल टू व्हाट I इंटू KF इंटू M. आई वैल्यू कितना आएगा निकालो किसका NaCl का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो कितना आएगा I इज इक्वल टू 2. KF कितना दिया है 1.86 और मोलालिटी कितना है 0.1. तो करेंगे तो कितना आएगा 0.372. बट फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस. सो TF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 0.372.
जीरो में से कोई भी वैल्यू माइनस करोगे तो वो क्या आ जाएगा, -0.378, तो आंसर बनेगा सी। Likewise, next, the depression in freezing point of 0.01 molar aqueous solution of urea, sodium chloride and sodium sulfate in the ratio of, चलो यूरिया का ब्रेकडाउन होगा क्या, नहीं, तो 1 का 1 ही रहेगा। सोडियम क्लोराइड का 2 पार्ट्स में Na प्लस प्लस Cl माइनस टाई वैल्यू 2 आएगा, और सोडियम सल्फेट Na2SO4 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस टाई वैल्यू कितना आएगा, 3, तो रेशियो क्या होगा, 1:2:3। तो तीनों में से कौन सा आंसर आएगा, चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी। क्लियर है, बिकॉज आई वैल्यू यूरिया का 1 है, NaCl का 2 है और Na2SO4 का 3 है। हायर द आई वैल्यू हायर द कॉन्सेंट्रेशन, so the ratio will become 1:2:3. Now the want-off factor for a 0.1 molar barium nitrate solution is 2.74. I वैल्यू कितना है, 2.74। बेरियम नाइट्रेट का डिसोसिएशन होगा तो m वैल्यू कितना आएगा, 3, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा वो निकालना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए आगे मैंने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था, क्या था, अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई m-1। चलो यूज करो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, अल्फा इज इक्वल टू I-1 बाई m-1। आई वैल्यू 2.74 -1 डिवाइडेड बाई 3 -1, 1.74 बाई 2, 0.87, विच इज इक्विवेलेंट टू 87%। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। Now next numerical, determine the amount of calcium chloride having I value 2.47 dissolved in 2.5 liter of water such that osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 degree Celsius. Pi is equal to 0.75, V is equal to 2.5 liter, I is equal to 2.47, W2 निकालना है, and temperature 27 degree Celsius is equal to 300 Kelvin लेंगे, R is equal to 0.082. Now, we know that pi is equal to I into CRT, and I into C is equal to W2 into 1000 divided by M2 into V होगा. So W2 is equal to pi into M2 into V divided by IRT. Pi value कितना है, 0.75, M2 111, volume 2.5 liter divided by I value 2.47 into 0.082 into 300. सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.42 ग्राम। अगर आप लोग ने आई वैल्यू नहीं इंप्लीमेंट किए तो सब आंसर गलत हो जाएंगे। सो आई वैल्यू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। Now, trick to solve some of the important MCQ for JEE and NEET examination. As we know that we have a time limit in JEE and NEET examination, so we need some shortcut tricks. And the most important and easiest way to understand that is by following these important MCQs. Now, if osmotic pressure of 1 molar solution of the following in water is measured, which of the following has a maximum osmotic pressure? डियर स्टूडेंट, आगे जैसे बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। पाई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना आई वैल्यू बढ़ेगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर तुम्हारे जो कुछ भी क्वेश्चन है उसके ऑप्शन देख लिए, सिल्वर नाइट्रेट, MgCl2, AlCl3 एंड Na2SO4, तो सबके आई वैल्यू निकालो। सिल्वर नाइट्रेट का आई वैल्यू कितना होगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस यानी 2, MgCl2 का Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस 3, AlCl3 का Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस यानी 4, और Na2SO4 का 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस यानी 3। तो हाईएस्ट आई वैल्यू किसका आया, ऑप्शन सी का आई वैल्यू 4 आया। तो आंसर क्या आएगा, अवर आंसर विल बी सी। हायर द आई वैल्यू हायर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, आंसर विल बी सी। सिंपली आई वैल्यू निकाल के हमने इसका आंसर दे दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन वाटर पोसेस लोवेस्ट वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर जितना आई वैल्यू ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर कम होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वैल्यू, यानी जितना आई वैल्यू बढ़ेगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा, उतना वेपर प्रेशर कम होगा।
चार ऑप्शन दिए हैं NaCl, MgCl2, KCl एंड नन। NaCl का आई वैल्यू कितना होगा 2, MgCl2 का 3, KCl का 2 और नन तो आएगा ही नहीं। तो चारों में से किसका आई वैल्यू सबसे ज्यादा आया ऑप्शन बी का। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा बी। क्लियर, आंसर विल बी बी। ओके, तो सिर्फ आई वैल्यू निकाल के हम इन सब क्वेश्चन के आंसर। Which of the following solution exhibit highest boiling point? Delta TB is equal to I into KB into M. तो I वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट था। जितना I वैल्यू बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बढ़ेगा। चलो निकालो 0.01 मोलर यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट एंड ग्लूकोज। तो I वैल्यू यूरिया का कितना होता है 1, पोटेशियम नाइट्रेट का 2, सोडियम सल्फेट का 3 और ग्लूकोज का 1। तो हाईएस्ट आई वैल्यू किसका आया सोडियम सल्फेट का। आंसर कौन होगा सी। क्लियर, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? हायर द कॉन्सेंट्रेशन इनटू आई वैल्यू, हायर द आई वैल्यू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। और कई बार हमें कॉन्सेंट्रेशन को भी देखना पड़ता है, तो आई इंटू सी वैल्यू ध्यान रखना। चलो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता नहीं है, आई वैल्यू नहीं है। NaCl का ब्रेकडाउन किसमें होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस I2 है। जिंक सल्फेट का भी कितने में होता है Zn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस आई वैल्यू 2 ही है। और यहाँ पे आई वैल्यू यूरिया का कितना है 1। बट अमोंग NaCl एंड जिंक सल्फेट NaCl एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, so I value of NaCl is higher than zinc sulfate, so our answer will be B. Answer will be B. Clear? Now I request all the students try to answer all these 3 MCQs and give your answer in a comment section. Those students who had the correct answer of the all 3 MCQs, I will display the name of such student in the next video. So give your answer in a comment section. First question, which of the following solution has the highest freezing point? Highest freezing point option are as given. Second, which of the following will produce maximum depression in freezing point of its aqueous solution? Option as given. And which of the following has the highest boiling point? And the option are as given. Give your answer in a chat corner, clear in a comment section. I will give the name of the top those students who will give the correct answer of all the 3 questions in my next video. Okay, so keep enjoying study with the career and see you tomorrow at the same time. Thank you. Take very good care of yourself. Enjoy your study.